box installation. So hi guys, in this video we will go ahead and see we have purchased a TV from Amazon on 2023. Last year I purchased this TV. This is a wonderful TV which I have purchased from Amazon. Somewhere around 1,30,000 or something. I'll put the price tag here maybe if possible. Coming to this TV is a wonderful TV. The problem is initially it was restarting by itself and the far field mic was not working properly. I have crossed 1 year with this TV and after that I did not have any issues. After that I did not face any problems. The picture quality is really awesome and all the ports are all working fine as per the description, and I get stunning picture quality. If you are not having enough distance between TV to your sofa or something, then you will feel the color. You will not feel any dizziness or anything, but you will feel the color. So ensure that you have proper distance, only then you will be able to enjoy this TV. So make sure that you have proper viewing distance. Okay, the viewing distance is available in the website only or in the Amazon description only, so kindly check it before buying it. So that is one thing. And the remote quality is really poor. The remote, actually I purchased this TV thinking that I will have air mouse or something like that, but unfortunately I did not get that quality of the remote. It looks nice. It looks like it is made up of aluminum metal. But the problem is it is very sharp. The edges are very sharp. So what happens is when you tend to by mistake if you drop it somewhere, it will definitely make a scratch. So that is one thing. And one more thing is this remote is very costly. You will not be able to find any replacement remote, mobile app or something, remote app or something. You will not have that kind of option for this TV. I have searched many options, but none of this work properly. Make sure that you keep this remote very safe. Apart from that, remote itself will work really good. Initially I had a problem far field mic on the TV. There are two mics in this TV. One is in the remote itself, and that is the Google Assistant. The other one is in the TV, that is called far field mic. So that far field mic it will keep on switching on automatically and it will switch off automatically. Those times actually I will switch off that mic. There is a button underneath the TV. So if you switch off that, then that far field mic on the TV will not work. And the remote mic, that is Google Assistant, will really work good. Whenever I have hard time typing something, I will definitely go ahead and use the mic Google Assistant to search content, and mostly the content will search only on YouTube, and sometimes it will search on other apps. It will give results from other apps. Basically it is really helpful when you wanted to search a lot of contents on YouTube only. Apart from that, none of the other apps like funky apps like cameras or AirPlay or other apps which is available on Google Play Store, you will not be able to install it. Limited apps which is particularly available for TV, then you will be able to view that app here in this Play Store. So that is one thing. Apart from that, so far I did not face any other problems. The TV is really awesome. सर कभी भी अभी टीवी ऑन करने के बाद में टोटल डिस्प्ले ऐसा आ जाएगा सर आपको. Sorry? टीवी ऑन होने के बाद में स्टार्टिंग होम डिस्प्ले ऐसी आ जाएगा आपको. जो टीवी के ऐप्स कुछ डाउनलोड करे थे इधर आ जाएगा सर पूरा. सब नहीं, वो माइक ये ऑफ करना. ओके, माइक ऑफ करना है. हाँ, ये मालूम नहीं कैसा ऑफ करना. नीचे एक स्विच रहता है सर, स्विच ऑन करे तो बस तो कंटिन्यूस चल रहा है वो. अगर ऑन पे है तो आपको रहता है, इधर एक बटन रहता है सर. अच्छा, बटन प्रेस करे तो आपको दो बटन रहते हैं. एक तो टीवी का मैनुअल ऑन ऑफ रहता है, एक लेफ्ट राइट का एक बटन रहता है छोटा सा. वही माइक का तो देखो लेफ्ट साइड में देखो अभी ऑन हो. अच्छा, राइट साइड में अभी ऑफ. सो टीवी का अगर कुछ ऐप डाउनलोड करें तो पूरा इसमें आ जाएगा सर प्लेस में. ये स्टार्टिंग इनपुट है तो HDMI का टोटल का 4 पोर्ट्स रहते हैं सर. HDMI 1 2 3 पोर्ट्स. AV का जो सेटअप बॉक्स का 3 पिंस आता है, वाइट रेड येलो, वो केबल लगा तो AV पे जाना है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 120 एच और 60 एच. हाँ, वो 120 एच HDMI कोड. 120 एच जो कंटेंट है ना सर, कंटेंट के बाद में प्ले हो जाएगा सर आपको. इट इज नॉट प्रॉब्लम एनी ऑल 120 हर्ट्ज. नहीं, ऑल 120 जो कंटेंट जो कैसा रहता है 120 हर्ट्ज रहता है, 120 प्ले हो जाएगा. और 60 एच है बोले तो 60 एच प्ले हो जाएगा. अगर कुछ है सर अभी HDMI कुछ प्ले करने के लिए HDMI PS4. अब इसमें जाके भी चेक कर सकते हैं सर. टीवी स्विच ऑफ हो रहा आफ्टर सम टाइम. एग्जैक्टली हाउ मच टाइम सर?
साइन पैटर्न क्या भी नहीं है। अगर 120 है तो 120 आ जाएगा। क्या भी पैटर्न नहीं है। ऑटोमेटिकली समटाइम्स का बाद वो ना स्विच ऑफ हो रहा। मे बी एग्जैक्टली एक 1-2 आवर्स में है तो No, it is not like that. Yesterday 4 times हुआ। I was watching for 1 hour ओके and then it was fine. It was not a problem. After sometimes I was started watching in the afternoon. ओके वो after some time वो ना switch off हो गई, so restart. ओके भाई जो स्टार्टिंग कैसे ऐसे ही आ रहा है। रीस्टार्ट हो रहा। रीस्टार्ट होने के बाद हाफ एन आवर चलने के बाद उन्हें रीस्टार्ट हो रहा। उसके बाद इवनिंग तक क्या भी नहीं है प्रॉब्लम। ओके 6 o'clock का स्टार्ट गया अगेन। आई स्टार्टेड द टीवी ओके अराउंड समवेयर अराउंड 8:39 it went off. maybe 3 hours 6 7 8 No, it is not. Pehले it was 1 hour. Second time it was half an hour. Third time it was 3 hours. एक काम करना सर इसमें एक रीसेट रहता हमारा सर्विस का जो फैक्ट्री रीसेट एक बार मैं रीसेट कराएगा एक बार चेक करा के मेरे इवनिंग तक बोल दीजिए अगर अभी रीसेट करें तो पूरा ऐप चले जाएगा सर। ऐप्स बोले तो ऐप्स रहेगा जो लॉगिन रहता ना आईडी चले जाता और मेल आईडी भी चले जाता फिर से आप लॉगिन कर सकते हो। ये नेटफ्लिक्स प्राइम जो आईडी रहता ना आईडी चले जाता पूरा जो स्टार्टिंग कैसा है टीवी एस्टिक्स आ जाएगा। अच्छा टेल मी हाउ टू रीसेट है। आई विल रीसेट आफ्टर सम टाइम। सर जाना सर इसमें सेटिंग्स में जाना है। अच्छा सेटिंग्स में जाके डिवाइस में रहना डिवाइस में लास्ट में रीसेट है ना ओके वो रीसेट करा के No. जस्ट बता ओके ये पे नीचे जाके एरेज एवरीथिंग बोले तो पूरा एरेज हो जाएगा। एक बार पूरा लॉगिन आईडी होने के बाद में एक बार रीसेट कर लीजिए सर और क्या इश्यूज है सर इसमें ओनली रीस्टार्ट प्रॉब्लम। Only restart. रीस्टार्ट प्रॉब्लम। ओके अभी आई डिडंट सी एनी अदर प्रॉब्लम। वो जो कब करेगा सर ये रिस्टार्ट ये रीसेट कब करेगा ये तो फर्स्ट रीसेट आई डिडंट डू। एक बार रीसेट करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा आई विल रीसेट एट दैट। बहुत बड़ा टीवी है ना वो 1,30,000 ना ये क्यू मॉडल है ना ये हाँ? पिक्चर रिजर्वेशन चलो अच्छा क्लैरिटी अच्छा रहता है सर अच्छा सर इफ आई वांट टू कैमरा कैन आई इंस्टॉल कैमरा। देखना पड़ेगा सर वो तो एक्चुअली तो हमारा गूगल प्ले स्टोर फुल नहीं आ रहा क्या? हाँ तो सर ये है ना नहीं गूगल प्ले स्टोर में ज्यादा ऐप है फोन को। हाँ नहीं तो जो इसमें लिमिटेड रहता है सर Only TV का app- टीवी का ऐप्स रहता है ना वही रहता है। ओके और एक है सर अभी कभी भी अभी टीवी अगर नाइट टाइम में आप स्लीपिंग माने हाँ। ये लॉन्ग प्रेस कीजिए सर हाँ ओके लॉन्ग प्रेस करे तो टीवी पावर ऑफ हो जाएगा। ओके अभी नॉर्मली आपको सब लोग क्या करते हैं नॉर्मली वन टाइम जस्ट स्मॉल प्रेस कर रहा है। तो क्या बोले थे वो स्टैंडर्ड में चले जाएगा टीवी ऑटोमेटिक रन होता और इसमें डाटा भी रन होता। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी प्ले कर रहे हैं नॉर्मली अभी आप लोग क्या करेगा इसको वन टाइम प्रेस कीजिए अच्छा टीवी तो नॉर्मली ऑफ होता बोलते सब लोग ऐसा ऑफ नहीं होगा ये टोटली पावर रन होता डाटा भी दोनों रन होता जो अभी कंटेंट की तरफ किया हम लोग यूट्यूब से ऑफ किया ना अभी यूट्यूब में आ जाएगा सेम चैनल ऑलरेडी इसमें थे कभी भी आप होल्ड पे रखना है ओके ओके पावर ऑफ करें तो टीवी आपको टोटल पावर कट हो जाएगा और डाटा भी कट हो जाएगा ओके आपको हैंगिंग भी ज़्यादा नहीं रहता ओके कभी भी टीवी ऑन करने के बाद में लोडिंग पे आना सर वीडियो बोल के व्यू लोडिंग टेलीफोन में पूरा ऐसा ना कभी भी ऐसा आए तो टोटल टीवी कट ऑफ हो जाएगा। ओके टीवी का कुछ कॉर्डर बॉक्स है सर नीचे cotton box. Anything else you want to say about this TV? I don't know. मैं first time I'm using Android TV. 100 तो पूरा टोटल सेम ही रहता है सर ये पावर का बटन सब लोग नहीं मालूम है एक्चुअली वो एक ही है बस और इसका वॉइस का So far field mic बोल रहा है ना? हाँ वो क्या है? यही है सर फार फील्ड माइक अभी ऑफ कर दिया ना हाँ. So if I keep it on, what will happen? ओके गूगल हे गूगल ओपन यूट्यूब Opening YouTube. Only in the remote it will work. प्ले तेलुगु सॉन्ग्स हे गूगल के गूगल इंस्टॉलेशन सही नहीं किया सर इसलिए तो नहीं आ रहा हूँ नॉर्मली तो आ जाता है What to do? कोई एक बार रीसेट करे तो अभी पूरा सेटअप भी हो जाएगा सेटअप इज अ फाइल फिल्म माइक ऐसे वॉइस में आ जाएगा ये And now you try when you're close. हे गूगल ओके गूगल Hey Google. हे गूगल
Okay Google, Gemini Motor Vlogs. Okay Google, hello. टीवी का कॉर्डर बॉक्स है सर. Huh? टीवी का कॉर्डर बॉक्स होता है हमारा. Discourse के. Actually you came for demo or switch off के लिए आया? एक्चुअली डेमो के लिए लॉगिन हो गया सर ये. Oh, I asked you for this one. नहीं, पूरा सर्विस फ्लो भी हम लोग करेंगे सर. हाँ करेगा. हाँ, पूरा टोटल सर्विस हम लोग. नहीं, इसमें क्या बोले तो डेमो एंड इंस्टॉलेशन बोल के इसलिए तो मैं पूछा. Please, अब जो कंप्यूटर you will also do installation ना? इंस्टॉलेशन. हे गूगल पूरा सेटअप करना सर एक बार फिर से. Okay, restart करो. पूरा वो चलेगा ना. ठीक है. आपका मोबाइल आईफोन है सर हैंड्रेड. iPhone है. हैंड्रेड कुछ मोबाइल है सर. हाँ वही. जस्ट लॉगिन करने के लिए. हाँ है. कौन सा ऐप चाहिए? FTV नहीं चाहिए. Google default apps रहता ना? डिफॉल्ट है. Spotify Sony live होना है. Sunburn. वही होना. मैक्स प्ले मैक्स प्ले. ओपन यूट्यूब. Opening YouTube. ओके गूगल. ओके गूगल. It's asking to switch on the mic. हे गूगल ओपन यूट्यूब. Opening YouTube. Okay, thank you so much for watching. Have a good day. Bye.